Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor, founder of TopGrade.pk and your biology teacher for entry test preparation class. Now we are going to start off our discussion with our next subsection, that is 2 to 5 kingdoms classification system. बेसिकली इस सबसेक्शन में हम ये डिस्कस करेंगे कि ओरिजिनली जो 2 किंगडम्स होती थी ऑर्गेनिजम्स की, उनसे हमने 5 किंगडम्स जो उनको उन तक कैसे पहुंचे. विल टॉक अबाउट दिस थिंग. First of all, I would like to ask you questions from you. Here we have got options. A option is kingdom fungi, B option is kingdom plantae, C option is kingdom animalia, D option is kingdom protista and E option is kingdom monera. First statement है हमारे पास, according to Robert Whittaker 5 kingdom system, Euglena is placed in. रॉबर्ट विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंगली यूग्लिना को हम किस में प्लेस करते हैं? तो प्लेस यूग्लिना इन द किंगडम प्रोटिस्टा. अनदर स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट विटेकर 5 किंगडम सिस्टम, अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स आर प्लेस्ड इन. तो जो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं उन्हें हमने किस में प्लेस किया हुआ? किंगडम फंजाई में. बेसिकली जो फंजाई होते हैं दे आर एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि ये अपने जिस सरफेस पे ये प्रेजेंट होते हैं उससे ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं. ऑलराइट, एंड देन वी हैव गॉट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स आर प्लेस्ड इन. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट विटेकर 5 किंगडम सिस्टम, जो इंजेस्ट करने वाले हेटेरोट्रॉफ्स हैं उनको हम किस किंगडम में प्लेस करते हैं? एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज किंगडम एनिमेलिया. अनदर स्टेटमेंट, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक